मुंबई मंत्रा और सीनेराइजर्स स्क्रीन राइटिंग द्वारा आयोजित मुंबई मंत्रा सीनेराइजर्स स्क्रीन राइटिंग प्रोग्राम 2015 में 10 भारतीय फीचर फिल्मों के प्रोजेक्ट को चुना गया है। यह कार्यक्रम 9 से 14 अगस्त तक क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में हो रहा है। इस प्रोग्राम में जिन 10 लोगों को चुना गया है उनके नाम है गौरव, पतकी, गजेंद्रश्रोतिया, राजीव, राव, शाजिया, इकबाल, प्रणव, महादेविया, मानव, विग, रवि, गुरिया, स्मिता, सिंह, महिपाल व मानपाल, राजदीप पाल व शर्मिष्ठा जयंती शामिल हैं। इस कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध फिल्मकारों ने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्रदान किया। So as Anjum and Rohit both had mentioned, we had 555 applications and then we had 100 screenplays and finally these 10, and I feel very privileged to introduce these 10 projects to all of you. I begin with ANADHIKRUT. This is a story about New India, the modern globalized India and the price that must be paid for this globalization. Illicit relationships, shady dealings, murders and betrayals. What am I doing here? I like to explain it this way. When I'm thinking of a subject, an idea is forming in my mind, I like to imagine the following. I like to imagine that I'm on a cheap flight to LA, one of those cheap flights where you stop off inevitably in somewhere like St. Louis at 3 o'clock in the morning in order to change planes. And I'm there in the airport, all alone, and I'm waiting to get to LA to pitch an idea to a Hollywood studio. And I'm very nervous, and there's nobody else in the airport except one man. And he's one of those guys, one of those huge fat guys, that sits in a sports bar at about 3 o'clock in the morning watching the reruns of the football games. Thank you very much for inviting me here because I'm going through a learning process myself, and it will be, I think, great pleasure to share this with all these great people. And I'm graphic designer, so I'm more visual writer, I can say. So I have to learn lots of things from you guys. I can see visual first, and then I start writing those visuals. So very brutal process. And in India, we can see, the screenplay till today is not given that enough attention because there are some phones are still ringing over here, and that's what so giving me lots of trouble. Actually I'm grateful to my writers. I borrowed their vision and kind of elaborated into pictures. Kamlesh, very important part of my career. He's given me more than anything else. Well, Rohit, you are fabulous, absolutely, in what you're doing. And Anjum will be the child of screenwriting, not the father. He's amazing. Difficult to put words. And at the helm of it, the Mahindra Group. This is truly fascinating time for our country and for the profession. We have so-called for the first time, after a very long time, maybe after 250 years, we are getting back into the helm of things globally. And so globalization is not merely the erasing of national and international boundaries. It's about socio-cultural assets. And this is what Mumbai Mantra is doing. The West has been doing it for very long, through music, through magazines, through TV programs, through cinema, through comic books, through novels. Now I think, I'm not saying the coin is flipping,
we should also grab the opportunity and tell our stories to the world. And the only way to tell our stories to the world will start from the writing process and from whatever we know and we've heard about stories, and we can adapt them and take them to the world. It's absolutely fascinating. Any writer, any filmmaker any performer feels very happy when more and more people listen to their stories. Colors of Fading Memories is my first feature script, and I've just started writing actually a couple of years ago. And it's basically a psychological drama set in the early 90s Bombay. It's a story that tells us about a girl called Sinha, who's stuck in a dysfunctional family with an estranged mother and a clinically depressed father, Kumar Sinha. And Satvi is basically a mundane and morose assistant director working in the industry, whose life takes a big turn when she finds an old film script which is hinted to be written by her father, and her father is a professor. So that takes her life completely by surprise. Ashim Mondo, the roadside biryani seller, whose childhood dream of becoming an artist got lost in his struggle to survive, now only wants to make his brother an artist. But life takes a surprise turn for him when Rebecca Bird, a British filmmaker, starts making a documentary on his life as a biryani seller, and in the process discovers some paintings done by him. Rebecca's spontaneous appreciation for Ashim's artistic talent ignites died down spark in him. His artistic urges flare up, and life does not remain the same, as Ashim now wants to achieve his dream for himself. Love, faith, ambition, jealousy, all mix in this tale of an ordinary man trying to achieve extraordinary dreams. Ashim Mondal, the biryani seller, is a dreamer. So are we. We are overwhelmed to be here today and really thankful to Mumbai Mantra CineRise Screenwriting Lab to give us this opportunity. राइटर ही सब कुछ है भैया, राइटर के बिना तो कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुंबई मंत्रा जो इतने सालों से ये कर रही है हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। और कोई भी फिल्म, कोई भी चीज़, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, तो राइटर के बिना मेरे ख्याल से कुछ कर ही नहीं सकते। एंड सबसे एग्जांपल तो मैं ये देता हूँ कि जो 24 जो मैं कर रहा हूँ शो, उसकी वो भी एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। इसलिए मैंने टेलीविज़न किया, राइटिंग की वजह से। तो मेरा हमेशा यही होता है कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मुझे कोई ऐसे राइटर्स मिले जो मैं अपने फिल्मों में और जो टेलीविज़न के मैं शोज़ कर रहा हूँ उसमें मैं इस्तेमाल कर सकूँ, उन्हें यूज़ कर सकूँ, और उनका टैलेंट और मुझे उनका योगदान बहुत ज़रूरी है उनका। नहीं, वो दौर आ गया अभी मेरे ख्याल से। अभी देखो जैसे कि कितनी किताबें हैं जिनके राइट्स मैंने ख़रीदे हैं और कुछ लोग भी ख़रीद रहे हैं, और अगर आप कीमतें सुनेंगे जो वो राइटर्स मांग रहे हैं, जो बुक की कीमत मांग रहे हैं राइट्स के, तो आपको हैरानगी होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन लोग जब ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो मुझे खुशी होती है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। मैं ठीक है, मैं प्रोड्यूसर है ना, तो मैं इस बार ऐसा सोचता हूँ। नहीं, फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ काफ़ी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जो है ये बहुत ही हर लिहाज से बहुत ही डेमोक्रेटिक है, और थोड़ी पाबंदियाँ तो हर देश में थोड़ी बहुत पाबंदियाँ होती हैं, मगर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे कम है। आप दूसरे देशों में जाएँ तो उससे ज़्यादा है। America and India are one of the two of the greatest democracies of this world. Definitely, there are times when, because of the diversity and because of all the, there are certain, but ultimately मुझे ऐसा लगता है कि I think still we are better off than most of the countries. Yeah, much better off. We can do better, but we are much better off. Yes. की ज़रूरत है हमारे सिनेमा की कि जो हमारी कहानियाँ हैं हम दुनिया को बोलें। जैसे कहा जाता है कि टू टेल स्टोरीज टू द वर्ल्ड, तो शुरू से ही ये प्रथा रही है स्टोरी टेलिंग की कि दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी कहानियाँ, अपने देश की कहानियाँ, अपने प्रांतों की कहानियाँ बताते हैं। तो
वैसे ही अब बहुत ऐसा एक वक्त आ गया है जब व्हेन वी टेल इंडियन स्टोरीज टू द वर्ल्ड, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे राइटर्स हैं हम उनको इनकरेज करें. Writers not necessarily from film school, writers not necessarily from Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, but writers from the heartland of India, from B towns, C towns, small centers, ताकि हम छोटे छोटे कस्बों की कहानियाँ दुनिया को बता सकें. Talk about the new bunch of directors and writers of films like Masan and The Black in Asia. जो किसी ने expect नहीं की थी कि इतनी अच्छी हो जाएंगी. They're getting good response. So what is your take on it? ये पहली बार नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा. हमेशा ही ऐसा होता है 50 सालों से कि जिसको हम न्यू वेव बोलते हैं, न्यू टैलेंट बोलते हैं, नई सोच बोलते हैं, नई उम्र की नई फसल बोलते हैं, हमेशा वही सरप्राइज़ करते हैं. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स होते हैं. बस ये बात अगर हम सबको हमारे जहन में एक बार बस जाए और हम राइटर्स को थोड़ा और बढ़ावा दें, सो आई थिंक वील हैव सम ग्रेट कंटेंट इन दिस कंट्री.